वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टू टूडीज। हमारी न्यूजीलैंड की कहानी अब भी अधूरी है, थैंक्स टू अस बीइंग फॉरएवर इरेगुलर। फिर भी ये कहानी अगर पहले से देखनी हो तो ऊपर लगे आई बटन पे अपना आई ले जाएं और क्लिक करें। चलिए आज की कहानी पे आते हैं। दिस व्लॉग इज अबाउट आवर 8 hour लॉन्ग जर्नी, in short, from New Zealand's capital Wellington to the geyser city Rotorua. गीजर सिटी क्यों? चलो आगे बताते हैं। दिन था 2 अप्रैल 2023। मॉर्निंग में हम अप्रैल फूल बन गए। पता है किसने बनाया? टाइम, समय। We booked a cab for 6:30 a.m. to catch the bus for Rotorua. 5 बजे का अलार्म लगाया था। Suddenly saw that our smartwatch shows 6:30. आधे घंटे में कैसे 1.5 घंटा बीत गया। फिर याद आया, टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड इज 7 hours and 30 minutes. यूजुअली अप्रैल के पहले संडे पे यहाँ डे लाइट सेविंग खत्म हो जाता है, तो साढ़े 7 घंटे का टाइम डिफरेंस 6.5 घंटा हो जाता है। एक और चीज़, यहाँ पे भी कैश वाला फंडा चलता है। जैसे कि जो बिल हुआ वो ड्राइवर को थोड़ा कम दे दो कैश में, तो इज़ ओके। तो हमारा बिल हुआ था कि 23 या $24। तो ही सॉ मी पुलिंग आउट कैश। उसने कहा कि नहीं $20 दे दो, चलता है। Say you think about me because I'm starting to doubt we will find a way back to each other when you're on the other side of the world. I'm here and I'm waiting, but I know I can't Almost say done. that we're getting ready for the reasons till I'm hoping. So as we are waiting for the bus to start, we got a message from our host. I think they are very kind. They offered us to upgrade us to a private room. One other thing that he offered us again is to pick us up from the bus stop. तो हम लोग अभी पहुंचेंगे। इनको कहा कि हमारे पास दो बड़े लगेजेस हैं, so if that's not an issue, sure. Let's see when we reach there. Seems like a really hospitable host. Everybody needs some time to figure themselves छोटे छोटे हट्स हैं। यहाँ पे हम लोग कैफ़े में, मैंने पहले से कुछ ऑर्डर कर दिया, कपल ऑफ सैंडविचेस एंड समथिंग। उसके बाद विल हेड ऑफ, प्रॉब्ली हाफ एन आवर ब्रेक है, देखते हैं। move slow. I'm not high or low, no, I'm somewhere. 2 lasagnas, one's a veg and one's a beef lasagna for me. If you wanna grab some drink. এখানে খাওয়ার ব্যাপারে কয়েকটা জিনিস বলে দিই। মনে হবে শুরুর দিকে হয়তো এক্সপেন্সিভ খুব বা কিছু, বাট অ্যাকচুয়ালি যদি আপনি দেখেন তো অনেক ক্যাফেজে আপনার যে কুকিজ বা স্কোন বলে একটা জিনিস বলে, কুকিজের মতো দেখতে এত বড় একখানা জিনিস, ওই একটা জিনিস খেলে আপনার বিকেলের খাবার তো অ্যাটলিস্ট হয়ে যাবে, ইফ সামবডি ইজ নট রিয়েলি টু হাংরি। তো ওইটা আই থিঙ্ক বেশিরভাগ জায়গায় $4-5 এমনি থাকে। দ্যাটস নাথিং অ্যাকচুয়ালি। ইনফ্যাক্ট যদি হেভি লাঞ্চ করতে চান যে পেট ভরে, ম্যাক্সিমাম হয়তো $30 অবধি যাবে ম্যাক্সিমাম। অ্যান্ড দ্যাট উড বি লাইক কাপল অফ বার্গার্স, মানে দুজনের আমি বলছি $30। তো $30-35 ইজ ম্যাক্সিমাম। মোস্ট অফ দ্য টাইমস ইট উইল বি $25 কি তার মধ্যে হয়ে যাবে। I'm feeling so lonely when you never phone me. I put your picture on my windowsill to make myself feel alright. But I knew it would. इंटरसिटी के अंदर 2 तरह की सीट्स होती हैं। एक है ब्लैक, एक ब्लू। ब्लैक सीट्स थोड़ी स्पेशियस होगी, इसकी थोड़ी प्राइसी भी होती हैं। और ब्लू सीट्स हैं जो थोड़ी कम स्पेशियस होती हैं, बट डिसेंट प्राइस एंड गिवन इन डिसेंट इनफ इन स्पेस टू सिट।
The only issue is probably with Beach is that what I found is उनके सामने कुछ रखने का एक कोई बैग या कोई चाली वगैरह कुछ नहीं होता, जैसे आपको समझ लो फ्लाइट्स में ही मिलता है या फिर दूसरे बसेस में भी इंडिया में मैंने देखा है, लेकिन यहाँ पे इसकी एक खामी है. दिस इज बेसिक, दिस इज हाउ इट इज, probably nobody's ever complained about it. Taupo city की बात करूँ, it's a small town, it's not a city also, it's a small town. और यहाँ पे लोग आते हैं, locals, I mean न्यूजीलैंडर्स ही घूम के आते हैं चिलिंग करने के लिए. स्पेशली टापू लेक ही सबसे बड़ा अट्रैक्शन. आगे एक मैकडोनल्ड्स है which is in the shape of an aeroplane. I wish I could have shown you that, but that's like a few blocks away. I can't be back on the bus in time if I want to show you that. Not be easy. Spending time apart and I almost can't believe it. Believe that you're gone and I don't think this will get better until. So finally we have reached Rotorua and our kind host is coming to pick up us. I think, oh, that's Peniel. So I think that is our host. Probably an Indian host? I don't know. Hi. It's Payal. I'm Shayan. Sayan. Yeah, Sayan. Nice to meet you. Oh, sure. ये हमारे kind host हैं. So we have reached our place, our Airbnb in Rotorua, and the host was absolutely gracious. She picked us up from there. It's just a 1 kilometer, probably a walk. And she picked us up, took us here. This is our Airbnb. So we are staying on that black door. She upgraded us to the private room. We didn't book for it. She upgraded us there. We'll be living on the top floor. There is a. Well, let's show you guys. ये रहा नीचे का area. So drawing room, come dining. She has everything ready, like packed eggs and stuff. This is the drawing room, and our room is just closed. We have a good evening. Not much to do. We just plan around the next couple of days. Although the host had already given us a brief of what we can do, what we can't do. Although I already had most of the things planned and everything. I was saying that I'm going to do this, I'm going to do that. So she said, "Well, wow, okay, it's already planned." But then she gave us a few other recommendations. We'll think about it regarding the costs and stuff that's going to take, and then we'll get started. So, bye for now. But I want you close, and I still have hope. I'm waiting every day for you to come back and tell me we can work it out, forget about the past. I'll take videos of you too. Oh, I see. You've got it covered. Yeah, I was just telling that these are a wonderful guest who Oh. invited us for a little biryani in New Zealand. That is something new. Biryani in New Zealand. We didn't expect that. Yeah. But great host, finally. Something that I was looking for in New Zealand, and these are all the people. So there is David. Hi. One extra plate. Tosh. Jeremy. You know both of us, right? Okay. I'm Mia. Yeah. I'm Peniel. And Peniel, who picked us up from the And you're on bus video. stop to here and the guided us chef. all through. And the lead in the table. Stop. The chef. Rajinigan. So we'll start off with our dinner, and probably later on we'll discuss some of the feedback. And yeah, just pray for a blessing over all of us as we eat and drink together. May this food be strength and nourishment to our bodies, and we welcome our new friends as well. And we hope they have an amazing time in Rotorua. Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much. Very nice.
It's dinner. The technique is that if the cooks say very nice, everybody they agree with it. They can't say it's not nice. That's what I said. It's very nice. It turned out perfect. Everyone, it's nice. It's actually nice. Thank you. Wow. That's amazing. Right. Yeah, nobody's acting here. Southern part of the India, there is a bit of spice more in the biryani Yeah. than probably the northern ones. Yeah. The Lucknowi biryani is completely different. Okay. The Hyderabadi one is different. It's The amazing. Kolkata one is different. The Bangalore one is even different. Wow. Okay. But for us in Malaysia, we are kind of mixed, We don't follow one. It's kind of everything mixed. Sometimes even our flavors have a Malay or Chinese flavor also. Yeah, when That's quite mixed. तो इस तरह दुनिया के सबसे बेहतरीन देश के एक छोटे से शहर में एक इंडो कीवी घर में चीनी और अमेरिकन दोस्तों के साथ एक मलेशियन अंकल के हाथों की बिरयानी चख के हमारे जिंदगी का एक और अनोखा दिन खत्म हुआ। अगले वीडियो में रोटोरुआ में बिताए कुछ बहुत ही एक्साइटिंग पल आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।